Students, as you have requested, so I come up with the solution of in short form. ठीक है, शॉर्ट्स की तरह से सॉल्व करेंगे आईएएस का. इस बार इस ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है एंड रिस्पेक्टिव मीन ये सारे है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये हमें प्रूव करने हैं. तो चलिए फटाफट प्रूव कर लेते हैं. तो यहाँ पर में एक्स आई इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई आई में भी वही है, एंड एस एक्स स्क्वायर ए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई एन, एंड वहां पर वाई बाई एन और एक्स वाई भी इसी तरीके से रहेगा. सो नाउ वी कंसीडर 1 by n समेशन ऑफ एक्स आई, एक्सपेंड अगर कर देंगे 1 by n समेशन ऑफ एक्स आई बाई एस एक्स. Since 1 by n equal to this, so we get so r x y यहाँ से लिख सकते हैं. So now we consider 1 by n sy square. If we expand it, तो यही हम लोग को दे देगा 1 by n समेशन ऑफ, ऐसे स्क्वायर में लिख सकते हैं. So rxy डायरेक्टली होगा माइनस 1 by 2n समेशन ऑफ xi sx sy स्क्वायर. अब देखिए ये जो टर्म है ये rxy है, इसको -1 लेके लिख सकते हैं, -1 + 2n इस तरीके से. This will be always positive, so rxy will be less than equal to 1, and अगर ये पर नेगेटिव हुआ तो ये rxy, so obviously 1 - rxy less than equal to 1 के बीच में ही रहेगा.